happening between two absolutely brilliant teams in the Super League, sponsored by the Paytm First Games. We wish the best of luck to both the teams, and Tushar's antique friends would be batting first. That's the news from the center. Ravindra has won the toss from Just Cricket. They've invited Tushar to bat first. Thank you. Thank you. All the best. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन
स्कोर पट्टी हाँ सर रेडी एक टाइम दिखा ना एक कर Hello all, good evening. We welcome you all to this Paytm First Games, the Super League match, a cracker of a match in the offing here between two wonderful teams, Antique Friends and Just Cricket. Just Cricket has won the toss and they have invited Antique Friends to bat first. This is the Super League, the Paytm First Games, TSL 2021-22 edition. And we've got a very good match in the offing today. We've had the pleasure to watch a lot of wonderful matches in this absolutely wonderful tournament. Some brilliant performances by the individuals playing in this tournament, and today should be no different. An absolute cracker of a match here. Just Cricket winning the toss, the captain Ravindra Junjunwala inviting Tushar's Antique Friends to bat first, and Nikhil and Tushar are the opening pair. Nikhil is on strike, Tushar is on the non-striker's end. भाई पट्टी डालना एक टाइम ट्राई तो मारना मेरे को नहीं दिख रहा है Manvendra Mishra would be opening the attack from Just Cricket's end. And Nikhil, as we have seen earlier in a lot of matches, he is a true performer and a stroke player, genuine striker of the cricket ball, and a very aggressive batsman as well. And this is good captaincy by Ravindra. First up, they've kept a slip there for Manvendra. The first ball coming up, played defensively towards the covers. Nikhil starting solidly. Manvendra bowling a good delivery, however a bit short in length. Would be expecting to bowl further up. We'll have to be careful against Nikhil. He is a wonderful striker of the ball. Coming with his next delivery is Manvendra. Oh, and this time he tried to cut it, but a good change in the length by the bowler there. Not easy for the batsman to cut. He's getting a lot of bounce as well. Manvendra, that's a wonderful start, and Nikhil missing that completely. But the intentions of Nikhil are absolutely clear here. Doesn't want to wait for even a few deliveries. Wants to hit the strokes as per his liking. Oh, and this time! That's a genuine edge. Wonderful bowling that by Manvendra. And the first slip does well there. Vijay Singh. पट्टी नहीं आया अभी तक Absolutely brilliant bowling that is, and Nikhil was वही कर रहा हूँ almost gone there. Just short of the first slip. Good start by the bowler there. So 3 dot deliveries to start. Wonderful start by the bowler there. As I mentioned, this is going to be an absolute cracker of a match. What a shot this is. It's a short delivery and punched really hard there. But that's a good stop.
And Nikhil gets only a single there. Trying for the second but not succeeding. Sent back by Tushar. That was a good decision. And a good throw from the deep. Restricting the shot only to a single. Manvendra coming with his next delivery. Another good delivery, and Tushar this time trying to cut it and slash it hard. That's a wonderful length. An absolutely wonderful line by Manvendra. He's sticking to basics, bowling the right channel, right from the word go. And not easy for any batsman to play the new ball in that fashion, especially when it is bouncing quite a lot. Oh, and this time he plays it in the air. That's a good shot. But cut nicely in the third man region for just a single. So that's a wonderful over to start. And Manvendra bowling a really good over and 2 runs after the first over. The score is 2 without loss. And we'll be back after a short commercial break. Stay मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Sunil Punjabi coming in to bowl the second over. Tushar on strike. Sunil is a spinner. Oh, he starts off badly there. That's a wide, way down the leg side. An extra given on the first delivery of his first over, the second of the innings. Oh, and that's a wonderful comeback. Bowled in the perfect channel there. Tushar trying to cut it. Not succeeding. Dot delivery, and what a good comeback that was by Sunil. This is a good shot played by Tushar. An easy single there. Nikhil back on strike. Tushar playing it with soft hands towards the mid wicket. Takes an easy single. Sunil with his next delivery. Nikhil on strike. And Nikhil hits it really well towards the mid wicket region. Just a single this time. He's coming for the second as well. Tushar, this could be out. Oh, and he just missed it there. The throw was not on the stumps, but that was good work by Sunil. Collected it really quickly and released it immediately. But Tushar could have got out if the ball would have hit the stumps. However, no harm that time to the batsman. Oh, and Nikhil this time. A big shot by him. That's a huge six. He picked it up really well. That was a full delivery, and Nikhil hitting it with a lot of straight bat and bottom hand power, and what a six that is. In the long off region. Absolutely brilliant start by Nikhil there. That's a good comeback by Sunil. And there's always a risk of starting with a spinner, especially if he's an off spinner. Could get hit for some runs, and that's what has happened this time. And Nikhil, as we know, is an extremely talented batsman, a genuine opener. And this time again he hits it in the air.
Could this be another big one, or this could be a catch? And he's taken it. Wow, what a catch this is. Absolutely brilliant catch that is. And the first wicket for the Antique Friends is down. And Sunil Punjabi takes his revenge in style. And what a wonderful catch that was by the fielder there. Brilliant that was on the part of the fielder. अरे बैंक से तो रिप्लाई Rajesh Naidu taking that brilliant catch, and the first wicket for Antique Friends is down. The score being 10 for the loss of 1 wicket now. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Prathamesh Parle, the new batsman. And the first wicket for Antique Friends is down, and what an important wicket in just the second over. And Manvendra coming with his next over. That's a good start by him. Bowling absolutely brilliant channel, and the line as well. A single taken easily that time by Prathamesh. Manvendra coming with his next delivery. Oh, and that is well played by Tushar there. The third man will have to do some work, and he misses it. But recovers well, and he's coming for the second this time, and this could be out as well. But this is good running by Tushar, and they go for the third, but they're coming back, and this could be another run out, and they're just not able to catch the ball. The fielders of Just Cricket team. Probably the new ball skidding quite a lot on the surface there. That was good bit of batting and running as well by Tushar. So the captain has started off well. He will have to play a long innings if they want to score a good score and give Just Cricket a good target to chase. And this time slightly slower and a shorter delivery by Manvendra. Tushar trying to cut it, but a dot delivery there. This is good bowling by Manvendra. Oh, and Tushar hits a brilliant drive there. Trying to come for the second, but this time Prathamesh says no, and that's a good decision. Just a single taken. That was a good shot. And the covers takes an easy single there. Tushar. Oh, and that's a wonderful shot by Prathamesh. Comes down the track and hits it for a huge six there. Over and above the covers region. What a shot that is. Probably the shot of the evening till now. This is the second six, and this was absolutely gorgeous the way he came down the track and played it with a straight bat and went all the way into the covers for a six. Oh, this time that's a good comeback. A good comeback by the bowler there, trying to hit it again. Prathamesh not succeeding. That's the end of the third over, and the score is 22 for the loss of 1 wicket after 3 overs. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers.
तेरा मेरा और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। Sunil Punjabi coming with his next over, his second. Tushar back on strike. And Prathamesh playing a wonderful shot in the last over. An absolute stunning six there in the covers region. Sent back there. Tushar was looking for a single there. Prathamesh rightly sending him back. A soft touch towards the short third man. Not fetching any run though. A dot delivery. This time he pulls it nicely towards the mid-on region and takes a quick single. That is good running by Tushar and Prathamesh. Rotation of strike is equally important. And they have been hitting quite well as well, these two batsmen. कल तो क्या Sunil this time not able to complete the delivery. A dead ball signal by the umpire. And to the pleasure of our viewers, we would like to inform you all, as always, we'll be bringing you the Hindi commentary in this Paytm First Games, the Super League match. Well bowled by Sunil this time. क्यों नहीं है वो आ रहा है क्यों नहीं वही उसके पीछे पड़ा स्कोर पट्टी नहीं आ रही रे। Oh, and this time Prathamesh trying to hit it big, but mistimes it and seems it will land in the no man's area, and that's what happened. Oh, and he's trying to take a quick couple. Succeeds in the end. But that was a very mistimed shot by Prathamesh there. Could have been out as well. Was lucky it didn't go to any fielder. Sunil Punjabi has given the breakthrough. Just cricket in his first over itself. This is the second. This time Prathamesh hitting it really well in the slot there. Uppish delivery and a boundary scored by Prathamesh towards the long off. Playing it deliberately in the air. And that was a poor delivery given the treatment it deserved. So he will have to be This is a good delivery. A dot delivery played towards the cover point by Pratham. And they take a quick single. So that is a good bit of running as well. And the score after 4 overs is 30 for the loss of 1 wicket. That's a wonderful start by the Antique Friends. Even when they've lost an important wicket in Nikhil.
Prathamesh back on strike. The fifth over to be bowled by Purab. Purav Nanavati bowling the fifth over, and Tushar on strike. Beg your pardon, it's Prathamesh who's on strike, and seems there's some requirement. He takes his cap this time, returns the helmet. Takes his helmet back. Wants to be absolutely safe against the Pacers, and that is what is the most important thing for any batsman. He wants to play a long and a fearless innings. Purab with his first delivery. That's a good start by him. Dot delivery there, trying to take a single. This time he plays it uppishly. That's a wonderful shot, and that's a boundary. Quite a full delivery outside the off stump, and he hits it really well there, Prathamesh. Another boundary towards the third man. He looks in great touch here, Prathamesh. Another good single taken this time by Prathamesh towards cover point region. Good response by Tushar as well. This is wonderful batting by both these batsmen. Haven't been in any pressure after Nikhil was out in the second over. Have been playing shots freely and trying to put a solid base to this score. They've got good batting, the Antique Friends. The lineup is really deep. You've got some really good hitters in Shiva, who we might see. And this could be a chance there, but just short of the fielder, and single taken towards the covers. And that's a good ploy by the captain there, Ravindra. Good delivery by Purab there. Tushar playing it uppishly. Oh, that's a wonderful bouncer. And he's used the one bouncer for the over perfectly there. That's a real good bouncer by Purab. Prathamesh had no clue. He tried to hit it but did not succeed. Absolutely brilliant. Oh, and this time a slower delivery. This is good mixing by the bowler there. A single taken towards the mid-off region. An easy single. Shouldn't have given that single, in my opinion. That's the end of another good over by the bowler. The score is 37 for the loss of 1 wicket. A good comeback by Purab after being hit for a boundary, and we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. 37 for 1. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स,
खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Manvendra coming with his third over. Starts off well, just a single given that time. Prathamesh takes a single. And that was bat. रन आउट ऑफ मैचेस वो चलते हैं। हेलो हाँ नहीं वो चलते हैं सर। यू हैव रन आउट ऑफ लॉटेड मैच, प्लीज रिचार्ज टू रिस्टार्ट यूजिंग परचेज। हाँ हाँ किया अभी 1 मिनट फिर से रिफ्रेश करेंगे। Manvendra bowling a good delivery this time. They're taking a quick single, and that's a cheeky run stolen there. Absolutely brilliant running by Tushar, and Prathamesh supporting him really well. प्रीमियम लिया, एडिशनल सेटिंग में गया, ये फिर यूट्यूब चैनल डाला, हो गया। उसके बाद गेट लिंक किया, ऑटोमेटिक ले और अपडेट है, उसमें टिक है। अभी मैंने कॉपी किया लिंक, ओके। हाँ ऐड इनपुट में वेब में गया, यूआरएल में कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अभी इधर दिखा रहा है, इसमें नंबर कौन सा बताऊँ मैं इसको। 1 नंबर में वीडियो है, ठीक है। और Manvendra with his next delivery, and Prathamesh on strike. That's a good shot by Prathamesh. Played it upishly. What a shot that is for a boundary. In the gap ये भी क्लोज करता हूँ। between the covers and the mid-off for a 4. Absolutely brilliant batting that by Prathamesh. लोगों से हाँ हाँ Brilliant batting that. And he's scoring at a very brisk rate. Prathamesh. आ रहा है उसमें। And showing us some high quality shots. This time he comes down the track and hits it really high. This could be a big shot. It is a big 6. What a shot that is by Prathamesh, and what a start by Antique Friends. Top order there. हाँ And Prathamesh, absolutely stunning batting that is. No words could describe the kind of hitting Prathamesh is doing. हाँ उसमें एडिशनल सेटिंग ना, देखो उसमें Manvendra with his next delivery, he's been really expensive in this over. कूपन And this time he takes an easy single towards the cover point region. वेब ब्राउज़र। हाँ 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 ठीक है हाँ 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 सेटिंग्स में आ गया And there's a 50 up नहीं with that single. उधर आना चाहिए ना अपने को, उधर नहीं दिख रहा। A wonderful start to the innings. 50 for 1 in just the 6th over. Manvendra with his next delivery. That is well played by Tushar, and this could be an easy 2 there. He's coming back for the second, and that's a good throw. Could be a run out there. And it seems he's सो क्या लूँ, क्या बेसिक लूँ, बेसिक क्लास made it. WC That's a good run taken by Tushar. ग्लासी फ्री हाँ क्लासिक लिए ओके। That's the end of the 6th over, and the score is 52 for the loss of 1 wicket. And we'll request a Hindi commentator now to join us in the commentary box हाँ सेम ही and entertain you all में एडिशनल से with his lovely Hindi commentary. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. 1 मिनट हाँ और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नेल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हाँ 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 उधर ही दबाए हाँ जनरल And we'll now request Charlene to take over चेंज in
in the commentary box with his Hindi commentary. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जी हाँ, मैं स्वागत करता हूँ अपने सारे दर्शकों और श्रोताओं का, और अभिवादन करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सभी का जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स द सुपर लीग के हर मैच में हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं. आप हमारी अंग्रेज़ी और हिंदी कमेंट्री को सुन के और उसकी सराहना करके. बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का. हम बहुत ही आभारी हैं आपके. और आदित्य सिंह के पास गेंद आई है. अब बाएं हत्था गेंदबाज स्पिनर हैं. बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत है. 52 रन 6 ओवरों में. और प्रथमेश की तो तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर. क्या बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने. और एंटीक फ्रेंड्स के पास एक से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी. और वही हम देख रहे हैं निखिल, जो कि इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, आज सस्ते में आउट हुए, लेकिन प्रथमेश ने आते ही उनकी कमी पूरी कर दी. और क्या ज़बरदस्त ये शॉट, कट शॉट. दूसरे रन के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही मिलेगा यहाँ पर. सिंगल टेक, एक रन लिया वहां पर स्वीपर कवर के क्षेत्र में. अच्छा कट शॉट प्रथमेश का. अभी एक मिनट. आदित्य की अगली गेंद और ये आराम से खेल दिया शॉट थर्ड मैन की दिशा में. एक भी रन नहीं. डॉट गेंद. जबरदस्त गेंदबाजी आदित्य की और ये बोल्ड कर दिया है यहां पर. प्रथमेश बढ़िया खेल रहे थे और आउट हो गए हैं. और ये दूसरा विकेट भी एंटीक फ्रेंड्स का गिर गया है. क्या जबरदस्त गेंदबाजी की आदित्य ने. तेज गेंद करी यहां पर उन्होंने. जी हां, आपको रिप्ले दिखाएंगे. ये देखिए क्या जबरदस्त तरीके से इनका ये स्टंप उखाड़ दिया है पर आदित्य ने. और किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है. 20 गेंदों पर 33 रन की जबरदस्त पारी खेली यहां पर प्रथमेश ने. और अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ. स्कोर हो गया है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बने रहिए हमारे साथ. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है. कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें.
जबरदस्त प्रहार, ये कट शॉट तुषार के द्वारा, कप्तान है और क्या चौका लगाया है। जी हां, आपको रिप्ले दिखाएंगे दूसरे एंगल से। ये देखिए, देरी से खेला हुआ शॉट 4 रन के लिए। और शिवा आए हैं नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड पे 1 रन लेकर खाता खोल चुके हैं अपना। तुषार सामना कर रहे हैं राजेश नायडू का। इनका पहला ओवर है ये। और ये बढ़िया गेंद, यहां पर अच्छा शॉट भी खेला लेकिन रन नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया ये बल्लेबाजी कर रहे हैं तुषार, कप्तान है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कप्तानी पारी ने खेलनी पड़ेगी, पूरे 20 ओवर रहना पड़ेगा विकेट पे। और ये बहुत ही जबरदस्त गेंद यहां पर राजेश की तारीफ करनी होगी। जी हां, कोशिश की उन्होंने कट करने की लेकिन विफल हुए और डॉट गेंद एक और। अभी बोलता हूँ। बढ़िया यहां पर अतिरिक्त रन मिल गए हैं एंटीक फ्रेंड्स को। जी हां, वाइड गेंद, खराब गेंद, ये दिशाहीन, और 1 रन ले लिया फाइन लेग पर वाइड के साथ, तो 2 रन मिल गए और शिवा वापस स्ट्राइक पर। और ये बढ़िया गेंदबाजी, शिवा 1 रन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये रन नहीं था और तुषार ने सही निर्णय लिया उन्हें वापस भेजने का। और ये ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर के बाद स्कोर है 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और एंटीक फ्रेंड्स लगभग 8 रन प्रति ओवर की रन रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और तुषार वापस स्ट्राइक पर। आदित्य सिंह आएंगे अपना दूसरा ओवर डालने। पहले ओवर में उन्होंने प्रथमेश को पेविलियन भेजा। 20 गेंदों पर 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद प्रथमेश वहां पर चूक गए। आदित्य की तेज गेंद आई और अपना विकेट गंवाया उन्होंने। बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड प्रथमेश। हालांकि उसके बाद शिवा और तुषार की साझेदारी शुरू हो चुकी है। तुषार स्ट्राइक पर, कप्तान है एंटीक फ्रेंड्स के। आदित्य सिंह देखते हैं इस बार अपने तरकश में से कौन सा तीर लेकर आए हैं वो कप्तान तुषार के लिए। और ये बहुत ही हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे और तुषार विकेट के पीछे खासे रन बनाते हैं। ये हमने उनके बल्लेबाजी में बहुत बार देखा है। ये उनकी एक खूबी भी है। आसान नहीं होता है कट शॉट खेलना, आपको उसके लिए अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं एक बल्लेबाज के तौर पर। और तुषार की ये बहुत बढ़िया खूबी। और यहां पर एक और विकेट आदित्य का, और ये बोल्ड हो गए हैं। जी हां, समझ में ही नहीं आई, ऐसा लगा तुषार को ये गेंद, और आदित्य की तारीफ करनी होगी। जी हां, बाएं हथा ये लंबा गेंदबाज और क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है। और 2 महत्वपूर्ण विकेट ले लिए यहां पर आदित्य ने अपने कप्तान के लिए और अपनी टीम के लिए। और तीसरा विकेट भी जा चुका है कप्तान तुषार के रूप में। और जहां एक तरफ लग रहा था कि एंटीक फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और बड़ा स्कोर बनाएंगे, वहीं एकाएक 2 झटके लग चुके हैं उन्हें। और तुषार भी वापस जाते हुए पेविलियन की तरफ। और 62 रन पर यह तीसरा विकेट गिरा है। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स,
खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अमोल सुनावने आए नए बल्लेबाज। क्या जबरदस्त शुरुआत है यहां पर 4 रनों से, वाह बहुत ही जबरदस्त है यहां पर बल्लेबाजी का नजारा दिखाया अमोल ने आते ही। जी हां, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं अमोल। आते ही चौका, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से खेला हल्के हाथों से, लेकिन क्या जबरदस्त दिशा दी उस शॉट को अमोल ने। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। इस शॉट से उनके अनुभव का पता चलता है किस तरह के बल्लेबाज हैं। आसान नहीं होगा इनके खिलाफ आदित्य सिंह को गेंदबाजी करना। हालांकि आदित्य सिंह की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। 2 बड़े और महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है आदित्य ने। एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हो रहा है जस्ट क्रिकेट और एंटीक फ्रेंड्स के बीच। बढ़िया शॉट यहां पर, और 1 रन के लिए शिवा ने तेजी से अमोल का साथ दिया वहां पर। हालांकि दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे, शिवा ने मना किया, वापस भेजा। सही निर्णय। लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हां, पैड से लगी थी गेंद। आदित्य अगली गेंद लेकर आते हुए शिवा स्ट्राइक पर, और ये पूरी तरह यहां पर चूक गए, लेकिन 4 रन मिल गए। बाय के 4 मिले हैं, चौका है ये 22 का। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे शिवा। जी हां, शिवा कोनार बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, और एक बार इनका बल्ला जब चलना शुरू होता है तो फिर रोके नहीं रुकता। हालांकि अभी तक पूरी तरह लय में नहीं आए हैं। एक मैच आईडी दे रहे। एक मिनट रुक, सॉरी, इसको पेश कर दिया। बहुत बढ़िया शॉट है शिवा का। और क्या यहां पर चौका बटोरेंगे? जी नहीं, जस्ट सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। थर्ड मैन की दिशा में खेला हुआ अच्छा कट शॉट। और आदित्य थोड़ी सी तेज गेंदें डाल रहे हैं ऐसा लग रहा है, और ये ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवरों के बाद स्कोर है 72 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। रन रेट 8 रन प्रति ओवर का। राजेश नायडू, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। तारीफ करनी होगी जस्ट क्रिकेट के दल की, जिस तरह से पिछले कुछ ओवरों में उनके गेंदबाजों ने विकेट चटकाए हैं। मैच को एंटीक फ्रेंड्स की पकड़ से अपनी तरफ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। 3 विकेट गिर चुके हैं 72 पे। 9 ओवर में 72 रन, 3 विकेट। 10वां ओवर चल रहा है, और एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर आने वाला है। हालांकि और ये बढ़िया गेंदबाजी, और क्या यहां पर एज था, और ये 23 रन के लिए आते हुए यहां पर रन आउट के भी यहां पर आसार हैं, लेकिन शिवा ने किसी तरह रन पूरा किया, और अमोल ने उन्हें एक तेज रन के लिए आमंत्रित किया, और शिवा ने अच्छा समर्थन दिया वहां पर अमोल का। अमोल सुनावने, शिवा कोनार। बढ़िया शॉट, कट शॉट यहां पर। 4 रन यहां पर मिलने चाहिए। जी हां, बहुत ही जबरदस्त प्रहार अमोल का। छोटी गेंद नहीं थी ये, लेकिन क्या जबरदस्त कट शॉट। हाथ खोलने का मौका दिया, और अमोल बहुत ही मजे हुए बल्लेबाज। आसान नहीं है इनको बल्लेबाजी में रोकना। आपको बहुत ही ज्यादा सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। जबरदस्त है बल्लेबाजी अमोल की।
और ये 1 रन के लिए आराम से कवर्स के क्षेत्र में खेला और आराम से 1 रन ले लिया। बहुत ही जबरदस्त ये प्रहार था अमोल का। डीप पॉइंट पर चौका लिया। 78 पे 3 और ये शिवा का बढ़िया शॉट, इस बार भी चौका मिलेगा। जी हां, जबरदस्त बल्लेबाजी ये और बहुत ही प्रभावशाली बल्लेबाज हैं शिवा भी। और मेरे को शायद ऐसे ही लग रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ सर, उसमें ना ऑटोमेटिक एक और चौका थर्ड मैन के क्षेत्र में। जी हाँ, छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, हाथ खोलने का पूरा मौका वहां पर और शिवा ने जरा सी भी चूक नहीं की। 4 रन के लिए इसे भेज दिया सीमा रेखा के पार। अभी अभी मैं उसमें टिक नहीं किया था, अभी के इस टाइम पे टिक, पहला टिक था, अभी मैं टिक नहीं किया। हाँ, टिक करके फिर से मेरे को कॉपी करना पड़ेगा ना, कॉपी करके फिर, बट वो है क्या है? हाँ, ओके। राजेश नायडू की अगली गेंद नहीं बट हो रहा है सौरभ जैसे, और इस बार फिर से करारा प्रहार। इस बार चेंजेस हो रहा है, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन थर्ड मैन के क्षेत्र में नहीं है ना, एक क्षेत्र रक्षक तैनात है वहां पर। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, खुलकर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और ये ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद स्कोर हो गया 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे आपके साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, यहां पर चूक गए शिवा। जी हाँ, आज लय में दिख नहीं रहे हैं जिस हिसाब से उनकी ख्याति है। जबरदस्त बल्लेबाज हैं। हालांकि कट शॉट मारा था पिछले ओवर में, वो बहुत ही बेहतरीन था, अपने प्रतिभा के अनुकूल वो शॉट था इनकी। आदित्य का ये तीसरा ओवर और एलबीडब्ल्यू की अपील, हालांकि लेग साइड की तरफ गेंद जा रही थी। जी हाँ, कहीं से भी एलबीडब्ल्यू नहीं था ये। बढ़िया यहां पर गेंदबाजी और क्या यहां पर ये आउट होंगे। और ये बल्ले से लगी है गेंद, इसलिए अंपायर ने सीधे खारिज किया इस अपील को सिरे से। शिवा स्ट्राइक पर, आदित्य की अगली गेंद और ये वाइड गेंद, खराब गेंद। आदित्य की अगली गेंद और एक बार फिर से बाहरी किनारा लगा। जी हां, सीधा बल्ला चला तो रहे हैं लेकिन लय में आज नहीं है। एक रन मिला थर्ड मैन की दिशा में। मोल का अच्छा प्रयास है, 1 रन थर्ड मैन की दिशा में। कैमरा भी चेक करके आता हूँ। आ विघ्नेश,
और ये अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी, आराम से एक रन ले लिया यहाँ पर अमोल की। जबरदस्त यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यहाँ तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की, आपसी तालमेल बहुत ही जबरदस्त इनका। और 11 ओवरों के बाद स्कोर है 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और आदित्य के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 विकेट ले चुके हैं वो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपके साथ वापस जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। विशाल पाटिल आए हैं नए गेंदबाज। शिवा स्ट्राइक पर और ये बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन वाइड गेंद का इशारा है अंपायर के द्वारा। और ये अच्छी गेंद और बढ़िया शॉट और बहुत ही जबरदस्त यहां पर गैप निकाला और 2 रन ले लिए यहां पर शिवा ने। अमोल की बढ़िया रनिंग। बढ़िया गेंदबाजी है और ये डॉट गेंद। विशाल ने अच्छी वापसी की 2 रन देने के बाद। बहुत ही जबरदस्त ये गेंद। बल्ला बदला यहां पर शिवा ने और विशाल ने शायद खतरे को पहले ही भांप लिया है और क्षेत्र रक्षण में बदलाव कर रहे हैं विशाल पाटिल। जी हाँ, शिवा की प्रतिभा से हम सभी परिचित हैं और ये बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं इसे। और ये वाइड गेंद, ज्यादा स्विंग हो गई हालांकि। और ये जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया ये। और स्विंग करा रहे हैं अच्छी खासी, तेज भी डाल रहे हैं विशाल। और एक और बढ़िया गेंद और यहां पर ये शायद
किनारा लगा, जी नहीं, बाइस का इशारा अंपायर के द्वारा। हालांकि थोड़ा सा उत्तेजित हो गए थे गेंदबाज, ऐसा लगा कि शायद अंदरूनी किनारा लगा है बल्ले का, लेकिन अंपायर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये सिर्फ 22 थे। 1 रन मिल गया वहां पर, चूक हुई विकेट कीपर से। और ये खराब गेंद, और अमोल ने उसे हवा में खेला, हालांकि 1 ही रन मिलेगा। और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हां, खराब गेंद थी और नो बॉल दिया उसे। अमोल इसे भुना नहीं पाए अच्छे से, बड़ा छक्का लगा सकते थे, लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसी गेंद आती है तो बल्लेबाज भी आश्चर्यचकित हो जाता है। और ये फ्री हिट है। और ये फ्री हिट है और शिवा स्ट्राइक पर, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फ्री हिट पर अगर शिवा आते हैं स्ट्राइक पर, एक बड़ा शॉट हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और हम वही सोच रहे थे और ऐसा ही हुआ। हालांकि बढ़िया क्षेत्र रक्षण, यहां पर 2 रन ले लिया आराम से अमोल ने। शॉट अच्छा था, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। विशाल की अगली गेंद, और एक और अच्छी गेंद, और इस बार फिर से चूक हुई यहां पर विकेट कीपर के द्वारा। 22 का इशारा, जी हां। और 12 ओवर की समाप्ति हो गई है और स्कोर है 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ड्रिंक्स ब्रेक के लिए अंपायरों ने यहां पर बुलाया है। और अब एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे आपसे जुड़ने के लिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
जबरदस्त प्रहार, ये 6 रन के लिए। और इसी बल की हम बात कर रहे थे, इनकी भुजाओं में जो है, जी हां, बाहुबली जैसा बल है। जबरदस्त प्रहार, बड़ा छक्का लगाया ये। क्या शॉट मारा है शिवा ने। क्या बोला? राजेश नायडू ने जबरदस्त गेंदबाजी कराई, लेकिन इस बार शिवा ने उनको पकड़ लिया और बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। बड़ा छक्का ये, और ये 100 रन भी पूरे शॉट के साथ। 105 रन स्कोर है। और एक और बड़ा छक्का। जी हां, बैट पे अगर इनके आएगा तो 6 ही जाएगा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी है, और इसे कहते हैं बहुत ही मैं उन लोगों को क्या बोल गया है? मच्योर बल्लेबाजी भी करना। जिस तरह की गेंदें आ रही हैं उसके मेरिट पे ही खेल रहे हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ, पिछला शॉट डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में था, और इस बार लॉन्ग ऑफ। बड़े शॉट्स खेलने में माहिर। जी हां, खेल का रुख बदल देते हैं ये अपनी बल्लेबाजी से, और देखते ही देखते स्कोर 111 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 25 पर आ गए हैं एकाएक, सिर्फ 20 गेंदें खेलकर 2 बड़े छक्के। क्या जबरदस्त प्रहार, दोनों। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की और इसकी प्रतिभा की। जी हां, ऐसी बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज को और किसी भी टीम का मनोबल तोड़ सकती है। बढ़िया गेंदबाजी है। राजेश नायडू की तारीफ करनी होगी यहां पर, और रन आउट की यहां पर कोशिश, लेकिन थ्रो नहीं किया। शिवा ने वापस भेजा अमोल को, और सही निर्णय ये। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। कभी कभी नहीं भागना भी अच्छी रनिंग होती है, क्योंकि गलत रन देने से बेहतर है आप ना भागें, वो भी जब शिवा इस फॉर्म में है तो क्यों रन आउट का चांस बनाएं। बढ़िया गेंदबाजी राजेश नायडू यहां पर पूरे दमखम लगाते हुए अपने। आसान नहीं है शिवा जैसे बल्लेबाज को रोकना, और उन्होंने पिछली 2 गेंदों पर यह किया है, वो भी 2 छक्के खाने के बाद। तो ये तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर गेंदबाज की। अच्छा कमबैक है ये, बढ़िया वापसी। ये 13वां ओवर, 111 रन स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी, और शिवा को इस बार सिर्फ 1 रन ही लेने दिया। अमोल दूसरे के लिए चाह रहे हैं आना, लेकिन शिवा ने मना किया। मिड विकेट पर आराम से 1 रन लिया शिवा ने। बहुत बड़े छक्के लगाए हैं शिवा ने, ये दोनों जो पिछले इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर। और लॉन्ग ऑन वाला छक्का तो शायद टीएसएल के सबसे बड़े छक्कों में से एक है। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की वो कम है। और अगर ये खड़े रह गए पूरे 20 ओवर तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्कोर 220 के आगे भी चला जाए। अमोल भी ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। 1 रन लेकर आराम से उन्होंने ये शॉट खेलकर ओवर की समाप्ति की। स्वीपर कवर पर 1 रन लिया। और ये ओवर की समाप्ति 13 ओवर में 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब हम अंग्रेजी कमेंट्री के साथ वापस आएंगे। हम अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेजी कमेंटेटर से कि आपका मनोरंजन करें, और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। विशाल पाटिल आए हैं अगला ओवर लेके, और अब हम अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेजी कमेंटेटर से कमेंट्री बॉक्स में आकर कमान संभालें कमेंट्री की। थैंक्स अ लॉट शालीन फॉर योर वंडरफुल हिंदी कमेंट्री। एंड अ वंडरफुल पार्टनरशिप
growing between these two batsmen, Amol and Shiva. Especially Shiva has been really severe on the pace bowlers. Amol this time trying to cut it, not succeeding. That was a good delivery by Vishal Patil. He has been really good in his spell today. And Antique Friends have been scoring really quickly, almost 9 runs and over they're scoring at. And 5 sixes have been hit in this innings. 5 huge sixes, and the 2 by Shiva were the biggest, without any doubt. Oh, and that's a wonderful shot, but seems this will only be a single towards long on. This Paytm First Games, the Super League match between Just Cricket and Antique Friends. We've seen so many individual performers, brilliant batsmen and some really wonderful bowlers in this tournament. A long tournament this is being played since November, and we are in Jan now. And that's a wide delivery. Probably he's already a bit wary of the batsman. That's why he tries to hit him on the pad, but doesn't succeed there. Gives a wide and a single as well. So 2 runs gifted there by the bowler. Still, I think he would be happy that didn't connect with Shiva's bat. Could have gone for a huge 6 as well. So 2 is any day better than 6. Oh, and this time that's an inside. Oh no, that has been given out. This is wonderful bowling by Vishal, and Amol had no answer to that. And the 4th wicket is down. LBW, Vishal Patil taking a good wicket there. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Rishi Mapara is the new batsman, the powerful left-hander. He's got some really wonderful runs under his belt. Rishi Mapara has the ability to hit big sixes at the fag end of the innings, and comes at number 5 and hits absolutely brilliant shots. Got a lot of power in his bottom hand, and hope we see that in today's match as well. Vishal Patil bowling really well. Oh, and that's a good start by Vishal, and Rishi taking a quick single. This is good running by Rishi, not wasting even a single delivery. Off the mark, right from the word go. A single taken towards the long off. And Shiva back on strike, and that should be the strategy of Antique Friends. Should be trying to give Shiva the maximum strike, the kind of hitting he is doing. He also needs to continue for the sake of his team. Oh, and this is good bowling by Vishal. Credit goes to the bowler there, not allowing the batsman to free their arms. And has taken a very important wicket as well in this over. Amol being sent back. LBW by Vishal there. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ.
अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Last delivery of this over, Rishi on strike. Vishal to Rishi, and a single taken easily by Rishi there, and could be a chance of a run out. No, Shiva was really quick there to respond and reached quite easily. That's the end of the over. And the score after 14 overs is 119 for the loss of 4 wickets, 119 runs. Last 6 overs left in this innings. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Purav Nanavati to bowl his next over. He's bowled just 1 over and given 7 runs. Not a bad start in the context of the match. Rishi on strike. Purav to Rishi. That's a wonderful delivery to start first up. Rishi plays it well towards the covers. No single taken, just a dot delivery there. And that's a good delivery and takes a single there. Rishi probably hit his bat. We'll see the decision by the umpire. Yes, no decision, no signal. So that's bad by Rishi. Absolutely brilliant running there by both the batsmen. Shiva back on strike.
That's a good shot played by Shiva, just a single there towards the third man. Change in length there by Purab. A single given, Rishi back on strike. And what a wonderful delivery that is. He's cleaned him up. Absolutely brilliant bowling that is. Just have a look at the replay. Perfect Yorker that is. And what a ball by Purav. A batsman of Rishi's caliber. Got beat there. Trade goes to the bowler, then the fifth wicket is down. Cleaned him up. Brilliant bowling that is. That was a peach of a Yorker, and very rarely have we seen wonderful Yorkers in the TSL, and credit goes to the bowler. It's not an easy delivery, and the score is 121 for the loss of 5 wickets now. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Nirbhay Mahimkar is the new batsman. And he'll be facing Purav, who's bowled an absolute beauty of a Yorker to Rishi Mapara and sent him back to the pavilion. And he starts off really well. Good comeback after a wide. An extra given, but slightly harsh there on the bowler, the umpire. That was a very close wide given. But he comes back really nicely and bowls a good length delivery. Nirbhay on strike. That's a good shot by Nirbhay. This could be. Oh, and that's a poor bit of fielding. Should have been only a single, but a 4 given there. So 3 runs gifted by the fielder. At a long off seams, he could not side the ball. And this can happen sometimes under the lights. And just have a look at the replay. It's a wonderful shot, and oh, and this time he didn't have a clue there. That's the end of the 15th over. The score after 15 overs is 126 for the loss of 5 wickets. And Nirbhay opens his account with a good boundary. And Vishal coming into bowl his next over. He's been really brilliant with his bowling. Vishal Patil. This is his 3rd over, has given 14 runs. I beg your pardon.
2 overs 14 runs. And 1 wicket is taken, Vishal. And that's a poor delivery to start. That's a wide. And the keeper misses it again. So a lot of misses by the keeper today. A single taken on that wide. So 2 runs added to the tally. That's a good shot by Nirmay. Just a single there towards the sweeper coverage and played it in the air deliberately. What a shot that by Shiva. Just a single though. That's a good comeback by Vishal again. A dot delivery. A slower one this time by Vishal, bowling really well. The very experienced campaigner, Vishal. Nirbhay not able to connect that. Another single taken easily by Nirbhay. Shiva back on strike. That's a wonderful shot this time and could be a boundary. No, that's a very good stop by the fielder. And just a single there. The sweeper cover fielder doing really well. That was a good shot by Shiva. Trying to free his arms. Getting only a single this time. And that's a good delivery to finish the over and Nirbhay playing another dot there. That's the end of the 16th over and the score is 132 for the loss of 5 wickets. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
Aditya Singh being brought into the attack. Again, this is his second spell and starts off with a wide. A bad delivery to start off the new spell. Just 1 over left in his quota of 4 overs. This is a good comeback by Aditya. Shiva trying to hit it. Not succeeding. This time he comes down the track, hits it powerfully, but Aditya puts it his foot in the way of the shot and just a single towards the long off. Shiva not able to connect this time. It's been a patchy innings by Shiva. He's connected some really wonderful hits, but oh, that's a wonderful delivery, and Nirbhay had no clue of that. Another dot. So Nirbhay has played a lot of dot deliveries. He's 6 of just 7 just 6 runs of 7 deliveries. Few dots played by him. Trying for the second and takes it. A soft touch towards the third man region and good running by Nirbhay. Takes 2 runs. That was the first one really fast. Aditya with his next delivery. Nirbhay trying to hit a big shot but not succeeding. Just a single towards the long on. Shiva back on strike. Aditya's last delivery of his quota of 4 overs. This is a 17 over running. 18 balls left after this. Shiva tries to give him the charge and takes a single there towards the backward point region. That's the end of the over. So after 17 overs, the score is 138 for the loss of 5 wickets and last 3 overs left, and we'll now request our Hindi commentator to join in and take you through till the end of this innings with this wonderful Hindi commentary. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है क्या हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. 17 ओवरों का खेल हो चुका है इस पहली पारी में. आखिरी 3 ओवर और अगले ओवर को लेकर आ रहे हैं पूरब नानावती. बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की है. 2 ओवरों में 14 रन दिए इन्होंने भी और 1 विकेट भी लिया है. शिवा अभी भी स्ट्राइक पर और क्रीज पर डटे हुए हैं. 32 रन पर खेल रहे हैं. हालांकि 30 गेंदों का सामना किया है. आज पूरा समय लिया है शिवा ने अपनी बल्लेबाजी में. और यहाँ पर डॉट गेंद एक. जी हाँ, ऑन साइड की तरफ खेलना चाह रहे थे ये शॉट, लेकिन पूरब की अच्छी गेंदबाजी, तेजी से डाली हुई गेंद, अच्छा खासी गति थी इसमें.
और ये बढ़िया शॉट, क्या यहां पर इन्हें चौका मिलेगा? जी हां, जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए। और यही खासियत है इस बल्लेबाज की, एक बार लय में एक बार ये आते हैं तो इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और आपको रिप्ले दिखाएंगे, ये देखिए क्या जबरदस्त है टेक्नोलॉजी रिप्ले की, वाह बढ़िया शॉट और 4 रन के लिए स्वीपर कवर के क्षेत्र में। जबरदस्त प्रहार ये। अगली गेंद पूरब की और एक और अच्छा शॉट इस बार, लेकिन कवर्स पे मौजूद हैं विजय सिंह, दीवार की तरह खड़े हुए और एक ही रन दिया। स्ट्राइक पर वापस निर्भय, एक रन लिया शिवा ने कवर्स पर। बढ़िया शॉट, ये कट शॉट, छोटी गेंद थी और उसे स्वीपर की तरफ खेला, एक ही रन मिलेगा। शिवा वापस स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं इसे, एक ही रन दिया शिवा ने, कोशिश पूरी की उस बाउंसर को खेलने की, हालांकि एक रन मिल गया थर्ड मैन के क्षेत्र में। और ये अच्छी गेंदबाजी है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और एक और अच्छी गेंद, और इस बार निर्भय की तरफ से एक और डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 18 ओवर के बाद स्कोर है 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी 2 ओवर बचे हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जुड़ेंगे आपके साथ जल्दी, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। विशाल पाटिल आए हैं अपना आखिरी ओवर डालने, ज़बरदस्त गेंदबाजी की इन्होंने। और ये शुरुआत यहाँ पर वाइड से विशाल पाटिल की, जी हाँ बहुत ही बाहर की गेंद, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। शिवा स्ट्राइक पर, बड़ा शॉट, ये करारा प्रहार, लेकिन क्या ये सीमा रेखा पार करेंगे? जी नहीं, 2 रन हो गए यहां पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जी हाँ, ये गुड लेंथ की गेंद उठाई शिवा ने, ऑन दी अप खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, 2 रन लिए। और ऐसे बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और भी बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 40 रन पर आ गए हैं शिवा 35 गेंदों पर, और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये बढ़िया शॉट, कट शॉट खेला यहां पर, क्या बोल रहे, सॉरी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्णवश सामने वाले से बात करता हूँ। ये सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में, और ये आउट हो गए हैं। बता दो रौनक भाई। हाँ, ये जी हाँ, स्वीपर कवर के फील्डर ने कोई भी यहां पर चूक नहीं की, और जैसा कि शिवा आज बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लय में नहीं दिख रहे थे। एंगल शेप कर दे।
40 पर शिवा आउट हुए और विशाल की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर एक और विकेट ले लिया उन्होंने और 40 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली शिवा ने। हालांकि अगर पूरा टिक जाते 20 ओवर तक तो शायद बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। टीम और निजी स्कोर दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। हालांकि अभी भी 148 रन 6 विकेट पर स्कोर है, कहीं से भी ये खराब स्कोर नहीं है। 10 गेंदें बची हैं और निर्भय और नए बल्लेबाज को अब ध्यान देना पड़ेगा कि वो 10 गेंदों पर जितने ज़्यादा रन बना लें अपनी टीम के लिए उतना अच्छा। नीलेश शाह हैं नए बल्लेबाज। अच्छा शॉट मारा था शिवा ने, हालांकि बहुत ही बढ़िया कैच लपका वहाँ पर सीमा रेखा के थोड़ा ही अंदर क्षेत्र रक्षक ने। दुर्भाग्यशाली रहे शिवा वहाँ पर और एक खराब गेंद वाइड। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अतिरिक्त रन दिए हैं इस बार जस्ट क्रिकेट ने अपनी गेंदबाजी में इस मैच में। उतनी गेंदें इन्हें फिर से करानी पड़ती हैं, तो अतिरिक्त रन तो अपने आप में बहुत नुकसान देने वाली गेंदें होती हैं। और ये जबरदस्त गेंदबाजी, क्या वापसी है और निर्भय बोल्ड होते हुए क्लीन बोल्ड किया विशाल ने यहां पर। इनका तीसरा ये शिकार, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और कप्तान ने आके उन्हें बधाई दी और उनकी सराहना भी की है। जी हाँ, शाबाशी मिली है कप्तान से इस ज़बरदस्त गेंदबाज को और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट इसी ओवर में ले लिए उन्होंने। और निर्भय जो कि काबिलियत रखते हैं स्कोर को तेज करने की, पेवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। स्कोर 149 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जुड़ेंगे आपके साथ वापस जल्दी। बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। निशांत पाटनकर आए हैं स्ट्राइक पर। अगले बल्लेबाज 1 रन लिया आराम से, थर्ड मैन की दिशा में खेला हुआ है, बढ़िया शॉट। और ये 150 रन का स्कोर पूरा हो चुका है एंटीक फ्रेंड्स की टीम का। आठ गेंदें बची हैं इस पारी में और निलय और निशांत को कुछ खास करना होगा इस स्कोर को 170 या 170 के ऊपर ले जाने के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 का स्कोर आराम से पार कर जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्त वापसी यहाँ पर जस्ट क्रिकेट टीम की। खास करके विशाल पाटिल की तारीफ करना चाहूँगा, बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। नीलेश शाह तैयार नहीं थे, विशाल को वापस जाना पड़ेगा अपने रनअप शुरू करने के लिए उनके मार्ग पर। और ये बढ़िया गेंदबाजी, जी हाँ, सही जगह से गेंद को अंदर लाते हैं। क्या ज़बरदस्त उनकी लंबाई है, गेंदों की लेंथ पे खास ध्यान देते हैं विशाल, तारीफ करनी होगी। बहुत ही अनुभवी ये खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी बहुत सीख सकते हैं इन जैसे गेंदबाजों से। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा गति हो, लेकिन अगर आप अच्छी गति के गेंदबाज हैं, जो कि विशाल हैं, और आप अपनी लाइन लेंथ पर ध्यान देते हैं तो आराम से 1 रन दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं। ज़बरदस्त ये रनिंग, वाह, तारीफ करनी होगी यहाँ पर। 2 रन आराम से पूरे किए, इसका श्रेय जाता है निलय को। इन्होंने दूसरा रन तेजी से भागने के लिए निशांत को वहाँ पर पुश किया और 2 रन ले लिए निशांत और निलय ने। विशाल को भी उम्मीद नहीं थी कि 2 रन ले लेंगे। 19 ओवर में 153 रन स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर अब बचा है और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ।
और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। आखिरी ओवर इस पहली पारी का और राजेश नायडू लेकर आते हुए निलय स्ट्राइक पर, और निलय ने हवा में खेला शॉट और राजेश यहां पर क्या कैच ले लेंगे? जी हां, कॉटन बोल्ड आउट हो गए निलय। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए और 8वां विकेट भी गिर गया एंटीक फ्रेंड्स का। और ये आखिरी ओवर, आपको रिप्ले दिखाएंगे। ये देखिए, आराम से कैच ले लिया, बढ़िया रिप्ले यहां पर, और अच्छी गेंदबाजी राजेश नायडू की, और बहुत ही बढ़िया ये कमबैक है। क्या वापसी की है जस्ट क्रिकेट ने। 153 रन पर 8 विकेट 19.1 ओवर में। छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे आपके पास नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया नए बल्लेबाज प्रतीक जाधव, पहली गेंद डॉट निकाली राजेश नायडू ने प्रतीक से। और ये हवा में खेला हुआ शॉट यहां पर, बहुत ही बढ़िया ये शॉट, कवच के क्षेत्र में 4 रन। वाह, प्रतीक ने आते ही वो काम किया जो बहुत देर से बाकी बल्लेबाज करना चाह रहे थे। बढ़िया शॉट ये। जी हां, और आप इनका बॉटम हैंड देखिए, कितने बलशाली हैं ये, तगड़े खिलाड़ी। देखकर कायरन पोलार्ड की याद आती है। और ये जबरदस्त प्रहार, क्या ये बड़ा छक्का होगा यहां पर? जी नहीं, ये हाथ में जा रही है गेंद और क्या कैच लिया है। वाह, तारीफ करनी होगी, क्या जबरदस्त यहां पर कैच लिया है। लॉन्ग ऑफर, बहुत ही ऊंचा गगनचुंबी शॉट था। राजेश नायडू को एक और सफलता, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर। 9वां विकेट भी जाता हुआ एंटीक फ्रेंड्स का। जी हां, तितर बितर हो गई है पारी उनकी, आखिरी विकेट बचा है और आज कुछ खास मेहनत करनी पड़ेगी उनके गेंदबाजों को। 3 गेंदें अभी भी बची हैं और प्रतीक ने चौके, 2 गेंदें बची हैं, माफ कीजिएगा। प्रतीक ने चौका लगाने के बाद अपना विकेट गंवाया और क्या जबरदस्त कैच लिया, बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जुड़ेंगे आपके साथ वापस, बने रहिए हमारे साथ। आखिरी 2 गेंदें बची हुई हैं। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। कौस्तुभ गुप्ते आए हैं नए बल्लेबाज, आखिरी जोड़ी है। 2 गेंदें बची हैं और ये बढ़िया शॉट खेला पॉइंट की तरफ, 1 रन लिया। राजेश नायडू की तारीफ करनी होगी, 2 विकेट लिया उन्होंने इस ओवर में और उछल्ले बल्लेबाजों को चलता किया है उन्होंने। और आखिरी गेंद इस पहली पारी की, बहुत ही बढ़िया वापसी है जस्ट क्रिकेट की।
एलन मिश्रा ने कैच लिया था लॉन्ग ऑफ पर, बहुत ही जबरदस्त कैच, और ये बढ़िया गेंदबाजी, 1 रन के लिए भाग रहे हैं और ये आउट। बहुत ही जबरदस्त ये विशाल शेठ विकेट कीपर हैं, उनकी विकेट कीपिंग, और कॉस्टोव रन आउट हुए आखिरी गेंद पर, कोई ज़्यादा विकल्प भी नहीं थे। जी हाँ, निशांत ने कोशिश तो की वहाँ पर रन बनाने की, लेकिन गेंद सीधे कीपर के पास गई और उन्होंने मौका ही नहीं दिया कॉस्टोव को रन पूरा करने का, और रन आउट होते हुए कॉस्टोव। और ये तीसरा विकेट इस ओवर में गिर गया और एंटीक फ्रेंड्स की यहाँ पर पारी खत्म होती हुई 158 रन, 10 के 10 विकेट गिर चुके हैं उनके 20 ओवर की समाप्ति के बाद, और 159 रनों का लक्ष्य दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त वापसी जस्ट विकेट की। एक समय ऐसा लग रहा था जब प्रथमेश पार्ले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते और उसके बाद शिवा कोनार ने अपने हाथ खोले थे, बड़े छक्के लगा रहे थे शिवा, आराम से 180 से 200 का स्कोर हो जाएगा, लेकिन जस्ट विकेट के कप्तान ने 155 बोला था, और बहुत ही ज़बरदस्त उनका अंदाज़ा टॉस के समय था। ये रविंद्र ने 155 बोला था कि 155 पर रोकना चाहेंगे और 158 पर रोक दिया है। तो तारीफ़ करनी होगी कप्तान की भी, जिस तरह से उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। और अब दूसरी पारी में आपके साथ वापस जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
We welcome you all to the second innings of the Paytm First Games, the Super League match between Just Cricket and Antique Friends. And what a comeback by Just Cricket team. Antique Friends team folding for 158 in their 20 overs, all 10 wickets down. The target is 159 for Just Cricket. The opening batsmen are at the crease and the fielders taking their position, and we are in for a cracker of a match. Both the teams are really strong. They bat deep. However, the bowling lineup of both the teams is also very good, especially Antique Friends, who have got some really wonderful pacemen. तो बैट्समैन क्या बोला आपने? सॉरी. So Shreyans on strike will be facing the first ball from Kaustubh Gupte. Oh, and that's a wide delivery. Starts off with a wide, not able to control the swing first up. Vishal is on the non-striker's end. Both these batsmen quite flamboyant in their approach and very aggressive. However, Shreyas Gupta is a class bowler as well. Has started off poorly though with a wide. He's a genuine swing bowler, Shreyas. Just have a look at his length and line. Oh, and that's a wonderful comeback by him. Kaustubh with his next delivery, and this time this will be a wide again. Yes, that is a wide. The umpire signals a wide, way outside the off stump there. So 2 wides given by Kaustubh. That's unlike him, the kind of bowler he is. An absolute treat to watch as a opening bowler. Uses a new ball really well. Oh, and he comes back really nicely, but Shreyans plays a good shot towards the fine leg region. Probably will come back for a couple and does come back for the second as well, easily. 2 runs taken by Shreyans. He's a very gifted player, Shreyans, and Vishal Seth, as we know, is a powerful hitter of the cricket ball. Kaustubh not able to find his line. Probably a bit rusty. Oh, and this time that's a wonderful delivery, and that is what he's known for. That's not a wide. The batsman asking the umpire, was that a wide? But the umpire not interested in that. Was not a wide at all. So wonderful bowling that by Kaustubh, coming back really strongly with a good delivery outside the off stump, and he's placed a slip as well, first slip for a genuine swing bowler.
Oh, and this time an absolute peach of a delivery. And that is what he is known for. That is his strength. The length at which he bowls. He gets that swing as well. A very quality bowler and very high class pace bowler, Kaustubh. Shreyansh trying to smack it, not succeeding this time. A good delivery as well. Playing straight to the point. No single taken. The point fielder does well there, Nikhil. So that's a very good comeback by Kaustubh after bowling two wide deliveries way outside the off stump, but then a couple of really classic deliveries, especially the one before the last one. That's a short delivery, poor delivery. Pulled really nicely by Shreyansh. Will get a boundary there. Kaustubh this time getting punished for a bad delivery and the treatment given by Shreyansh. So that's the end of the first over. The score is 8 runs without loss. Shreyansh playing really well. That was a good shot by Shreyansh. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Nirbhay coming into ball the second over. 8 runs on the board. Good start by Shreyansh. Nirbhay to Vishal now will be facing his first delivery of this innings. And Nirbhay bowling a good delivery, but Vishal playing it really well over the covers fielder, the short cover fielder being placed there, and 1 run taken only. Vishal not interested in the second. That was good fielding as well. Shreyansh was coming for the second run. Vishal sends him back. That was a good decision by Vishal. Shreyansh back on strike. Nirbhay. And that's a wide delivery by Nirbhay. That swung quite a lot. Genuine swing bowlers the Antique Friends team have. Kaustubh, Nirbhay. Nirbhay with his next delivery. Oh, and that's a wonderful delivery. Well left by Shreyansh as well. Knew where his off stump was, and Nirbhay bowling a wonderful line there. Absolutely impeccable length. So Nirbhay and Kaustubh both very good bowlers, but Shreyansh is playing well as well. A genuine opening batsman. Shreyansh has a very good technique. Look at his stance, such an impressive stance he has. Oh, and that's a wonderful ball again, and Shreyansh played
Played it really well towards the cover point. Tushar there, the captain, making sure no run is taken. Dot delivery there. Oh, and that's a poor delivery again. A lot of swing on offer, and Nirbhay not putting it in the right channel. A wide signal by the umpire. So a lot of extras given by these two bowlers in the first 2 overs itself. They don't have a big score to defend. 159 is the target, so they'll have to be really careful on giving the extra runs and the balls as well. That's a wonderful comeback again. So Nirbhay, genuine pace bowler, bowling the right line and length, and Shreyansh giving him the due respect. And this time Shreyansh trying to hit it big, but straight to the fielder there. And it seems it's Pratik Jadhav there who takes the catch, a simple catch, and Shreyansh losing patience. And Nirbhay being rewarded for bowling some really good length. And Shreyansh is the first wicket to fall, and Kaustubh has taken that catch. Kaustubh Gupte, the opening bowler. And the score is 11 for the loss of 1 wicket, and Just Cricket losing their first. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Purav Nanavati is the new batsman, and the first wicket succumbs there. Some wonderful pace bowling by Nirbhay. Oh, and Purav plays a good shot first up, but straight to the fielder there. Nirbhay bowling some really good length to the new batsman, and a wonderful line as well. So 2 overs, 11 runs for the loss of 1 wicket. That's a wonderful start by Antique Friends, trying to defend 158. And we'll be back again after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इस What a shot there by Vishal, but absolutely stunning fielding. Stops 3 runs for his team. Rishi Mapara there, fielding at covers, and just a single given. Kaustubh bowling a full length delivery, and Vishal hitting it with a lot of power, and Rishi Mapara making it sure it doesn't reach the boundary. Stops it at covers. Absolutely stunning fielding effort that was by Rishi. Kaustubh with his next delivery, and what a shot that is. Absolutely brilliant drive. Purav Nanavati playing a wonderful drive, and that's a boundary. Played it really well. Crested it for a 4 there. Purav in the deep point region. Just have a look.
Wonderful shot that is, and what a wonderful replay that was. थोड़ा गिन रहा था वहाँ पर Kostov with his next delivery. That's a wonderful delivery. Good comeback. Trying to cut it. Purav not succeeding. A dot delivery there. Oh, that's a good delivery, and Purav taking a quick single there. Vishal supporting him, and oh, and this could be chance of a run out, but a single taken easily. Pratik Jadhav trying to throw from mid wicket, not succeeding in hitting the stumps, but that is good effort nevertheless. A single taken though by Purav and Vishal. Quick single. Shreyansh Mehta, the first wicket to have fallen. He was playing well but lost patience very early in the innings and should have stayed back for a few more overs, but decided to hit a big shot. Didn't succeed and got out. Oh, and Vishal this time trying to hit a big shot and gets an inside edge, and that will be a boundary. So these are lucky runs for the Vishal and the Just Cricket team, but no matter how they come, boundaries and runs are always welcome by the batsman. Oh, and that's a wonderful shot by Vishal. But just a single this time. Kostov inviting him to hit the big shot. Bowling it in the good length area, and Vishal not succeeding that this time in hitting a boundary. Just a single towards the sweeper covers. 3 overs 22 for the loss of 1 wicket. And Nirbhay continuing with the second over and the fourth of the innings. Vishal will take the strike. This Paytm first games, the Super League match between Just Cricket and Antique Friends is being played at the Fatima Cricket Ground in the Vidya Vihar vicinity of Mumbai. Nirbhay coming with his second over, the first delivery of his second over. Vishal on strike. Vishal Sheth. That's a good delivery. Not allowing Vishal to free his arms the way he did in the last over. Oh, and that's a wonderful delivery by Nirbhay. Vishal trying to hit a big shot again, but the swing taking it away from the batsman. Wonderful bowling that by Nirbhay. Pitching it up and swinging the delivery, the new ball. Being handled really well by Nirbhay. He's taken a wicket also. Has given the breakthrough to his team.
Oh, another good delivery, and this time it's a wide signal by the umpire. Oh, and this time he drifts down the leg side, played it well. Vishal this time could get a boundary again and gets a boundary, yeah. So another boundary there by Vishal. This time it's leg buys. Hit the pad and rush towards the boundary. Probably he was trying for the in swinger this time. Nirbhay did not succeed. Bowled a wayward line and the ball drifted towards the leg stump. Went for a boundary after hitting the pads of Vishal Sheth, the opening batsman. Nirbhay with his next delivery. That's a good shot by Vishal this time. Probably they'll take an easy single there. Nirbhay Purav missing that delivery, trying to drive it, not succeeding. That was a good delivery, swinging delivery. Ball in the right channel as well, Nirbhay. Oh, and that's a wonderful delivery. Absolute Jaffa there. Trying to hit it uppishly, but tremendous swing there. And Nirbhay bowling a really good over, and after 4 overs the score is 28 for the loss of 1 wicket. And we'll be back after a short commercial break. Straight team. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है क्या हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Rishima Para coming into ball the 5th over of the innings. The score is 28 for the loss of 1 wicket. Left arm spinner Rishi starts off with a good delivery, but drifting down the leg side, hits the pad of Vishal Sheth.
That's a wonderful delivery, and Vishal plays it straight to the point fielder. Nikhil there. Absolute live wire he is. Another dot delivery by Vishal. Good start by Rishi Mapara, the left arm spinner. That's a wonderful length to bowl to Vishal. That's a wonderful delivery again, a dot ball. The fourth in a row. Vishal not comfortable against Rishi, it seems. 4 dot balls on the trot. Rishi starting off really well in his first over. That's a wonderful delivery again. 5th dot ball in this over. Could be a maiden over as well, the way he's bowling. Rishi Mapara bowling an absolute peach of an over. Vishal hasn't scored even once in this over. Oh, and this time he's appealing for LBW, and it has been given, and immediately it takes a review. He goes for a review, Vishal said, and Rishi Mapara has bowled a really successful over. Would be a maiden for sure. We'll have to just see whether this would be a maiden wicket or not. Third umpire being asked for. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. So that's not out given by the umpire. The third umpire doesn't agree with the on-field umpire, and that is not out. So that's a maiden over ball by Rishi Mapara.
और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Five overs, 28 runs for the loss of 1 wicket, and a scare for Vishal as the LBW shout was given out by the on-field umpire, but the review taken successfully by him, not out given by the third umpire, and Nishant being asked to bowl the next over. He starts off really well. Purav on strike. Nishant Patankar, the new bowler, starts off really well. And this time he hits it in the air, but in the gap. Wonderful shot that by Purav Nanavati for a boundary in the covers region. For a moment it looked as if it could go straight to the hands of the fielder, but that was a well directed shot into the gap. No matter it was in the air. He takes a wonderful boundary there, and Nishant bowling a short delivery and being punished by Purav there. That was quite a short delivery outside the off stump, so got a lot of room there Purav to free his arms, and that's what happens when a batsman can easily free his arms. Could get a boundary and immediately a fielder sent back. And this time he has taken it. What a wonderful comeback by Nishant. And Purav hitting it back to the bowler. And Nishant doing no mistake. Absolutely brilliant catching there. Just keeping his composure. And that's what is required when such kind of catches come all of a sudden back to the bowler. So credit goes to Nishant, and the second wicket for Just Cricket is down on the score of 32. 32 for 2 Just Cricket, and we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Manvendra Mishra is the new batsman. Is on strike, and Nishant Patankar starting off really well in his first over, takes a wonderful wicket. A caught and bowled by Nishant. And he takes an important wicket in the form of Purav Nanavati, who has been sent back into the pavilion by Nishant. This is the sixth over of the second innings of the Paytm First Games, the Super League match between Just Cricket and Antique Friends. Antique Friends scoring 158 and Just Cricket 32 for 2 in the sixth over. Nishant to Manvendra, and a single taken easily. I beg your pardon, that was a dot delivery. That was a good piece of work by Nishant. Again, another dot. Manvendra trying to hit a powerful shot. Goes straight to the mid-wicket fielder. And this time he hits it really well, and a good stop there, but no run taken.
could have been a single easily, but decides against it, Manvendra. Nishant has been absolutely brilliant in this first over of his. Just a boundary scored off his 5 deliveries and a wicket taken as well by Nishant. So wonderful start by him to his spell. Oh, and this time he almost got him there. Trying to play a big shot, not succeeding at all, Manvendra. And that's the end of a wonderful over by Nishant. So 6 overs and 32 for the loss of 2 wickets. And we'll now request our Hindi commentator to join in and entertain you all with his brilliant Hindi commentary. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. स्वागत करता हूं मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं का, और अभिवादन है आप सभी को इस दूसरी पारी में पेटीएम फर्स्ट गेम्स द सुपर लीग के एक ज़बरदस्त मैच में, जिसमें जस्ट क्रिकेट 159 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 32 पर 2 हो गए हैं. 6 ओवरों का खेल हो चुका है और शिवा कुनार को गेंद थमाई गई है कप्तान तुषार द्वारा. बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है और 40 रन की पारी पहले ही खेल चुके हैं पहली पारी में. अब देखना है गेंद से किस तरह से योगदान दे पाते हैं. विशाल स्ट्राइक पर, शिवा विशाल को, बढ़िया शॉट ये, और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कोशिश निखिल की, और ये 1 रन के लिए विशाल ने ओवर थ्रो का फ़ायदा उठाया और ये कैच भी हो सकते थे. जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्षेत्र रक्षण था. बहुत बढ़िया कट शॉट था, लेकिन करारा प्रहार किया था और ये देखिए कैच हो सकता था और निखिल ने कोशिश तो बहुत ही अच्छी की. जी हाँ, एक बार फिर से दिखाएंगे आपको. शिवा की अगली गेंद, स्ट्राइक पर है मानवेंद्र, और ये बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा. यहाँ पढ़कर खासी स्विंग कर गई और ऑस्ट्रम के बहुत बाहर वाइड गेंद ही थी ये. बढ़िया निर्णय अंपायर के द्वारा. और ये बढ़िया शॉट, लेकिन 1 ही रन मिलेगा. लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ है, करारा प्रहार. और ये बढ़िया शॉट 1 रन के लिए. क्या यहाँ दूसरे के लिए आएंगे? जी हाँ, विशाल दूसरे रन के लिए आते हुए. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों की, और डीप कवर पर खेला हुआ है शॉट. 2 रन मिल गए यहाँ पर विशाल को. शिवा कुनार की अगली गेंद, विशाल स्ट्राइक पर, और ये खराब गेंद वाइड लेग साइड की तरफ.
जी हाँ, अतिरिक्त रन रोकने होंगे उन्हें, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। जस्ट क्रिकेट को जो लक्ष्य दिया है एंटीक फ्रेंड्स ने, 158 का स्कोर बनाया है, 159 का लक्ष्य दिया है। एक एक अतिरिक्त रन बहुत ही ज़्यादा कीमती। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, बढ़िया गेंद शिवा की, क्या यहां पर एक कैच ले पाएंगे? और क्या जबरदस्त कैच है, वाह, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। निखिल ने, गगनचुंबी शॉट था ये विशाल का, और आउट हो गए हैं। क्या कैच लिया है वहां पर, और ये तीसरा विकेट गिरा। और जैसा कि मैं कह रहा था, शिवा कोनार के क्या ही कहने, 40 रन की पारी खेल चुके हैं और अब एक विकेट भी इन्होंने अपने कप्तान और टीम को दिलवा दिया। ये देखिए, बढ़िया गेंद, गुड लेंथ की गेंद को, और ये क्या कैच लिया है, वाह, शायद आज का सबसे बढ़िया कैच है ये। और ये 38 रन पर तीसरा विकेट गिरता हुआ विशाल शेठ 17 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। और अब विजय सिंह आए हैं, सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं इस टीम के। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम और जुड़ेंगे वापस आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम। मानवेंद्र स्ट्राइक पर, और ये शिवा ने एक छोटी गेंद डाली और उसे मानवेंद्र ने पुल किया। 2 रन के लिए आना चाहेंगे, हालांकि एक ही रन से संतोष किया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं शिवा। और ये बढ़िया शुरुआत विजय की, 1 रन आराम से ले लिया है। जी हाँ, बहुत ही बलशाली बॉटम हैंड है इनका। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ओवर शिवा का, सफल ओवर ये, 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन और 1 विकेट शिवा ने इस ओवर में लिया और अपनी टीम को भी दिलवाया और अपने कप्तान के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ओवर डाला। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। 7 ओवर में 40 रन, 3 विकेट, जस्ट विकेट। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। प्रतीक यादव आए हैं, नए गेंदबाज। स्ट्राइक पर विजय, बढ़िया शुरुआत प्रतीक की, और बहुत ही बढ़िया ये क्षेत्र रक्षण एक बार फिर से निखिल का। तारीफ करनी होगी निखिल, पॉइंट पर। जी हाँ, ज़बरदस्त फील्डर है निखिल, और पॉइंट पर सबसे खतरनाक फील्डर ही लगता है हर टीम का। हर्षल गिब्स, जॉन्टी रोड्स, युवराज सिंह, एक से एक
जबरदस्त फील्डर रिकी पॉन्टिंग, पॉल कॉलिंगवुड, बहुत ही बढ़िया गेंद ये प्रतीक की, लेकिन भारी किनारा लगकर 1 रन के लिए थर्ड मैन की दिशा में ये गेंद गई। अच्छी शुरुआत प्रतीक की यहां पर विजय सिंह को, और विजय सिंह 2 पर खेल रहे हैं, मानवेंद्र भी 2 पर खेल रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले आए थे वो क्रीज पर विजय की अपेक्षा। प्रतीक की अगली गेंद, मानवेंद्र स्ट्राइक पर, और ये जबरदस्त गेंद है। जी हां, प्रतीक यादव तेज तरार गेंदबाज, बहुत ही जबरदस्त इनका कद, और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की याद दिलाते हैं। जिस तरह से इनका रनअप है और जिस तरह की ये कद काठी रखते हैं, और गेंदें भी वैसे ही आती हैं। जी हाँ, उछाल भरी गेंदें कराते हैं, बाउंसर्स यूज़ करने में ज़रा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं, और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है इनकी। ऐसा लगता है मैल्कम मार्शल बॉलिंग करा रहे हैं। और ये ज़बरदस्त प्रहार यहां पर, जी हाँ, और ये 6 रन, वाह। और ये कमेंटेटर्स कर्स लगा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी हमने किसी बल्लेबाज या गेंदबाज की तारीफ की, अगली गेंद पर कुछ विपरीत हुआ है उसके साथ। और ये बड़ा छक्का लगाया मानवेंद्र ने, लॉन्ग ऑन का क्षेत्र रक्षक सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया। छोटी गेंद कराई थी, और जी हां, मैल्कम मार्शल की बात कर रहे थे, लेकिन मैल्कम मार्शल की गति इतनी तेज थी कि छोटी गेंदें खेलना आसान नहीं था उनकी गेंदों पर। और ये अच्छा कमबैक, बढ़िया वापसी प्रतीक की, लेकिन क्या जबरदस्त छक्का लगाया वहां पर मानवेंद्र ने। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। जी हां, कद काठी में बहुत लंबे चौड़े हैं मानवेंद्र भी, और विजय, दोनों ही बल्लेबाज अच्छे खासे बलशाली और बॉटम हैंड के धनी बल्लेबाज। हालांकि प्रतीक भी कोई आसान गेंदबाज नहीं है खेलने के लिए, लेकिन मानवेंद्र ने बहुत बढ़िया छक्का लगाया उन्हें। और इस बार प्रतीक बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहे, मानवेंद्र फिर से चूके, पूरी तरह चकमा खा गए। बढ़िया, ये एक युद्ध सा होता हुआ बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच। जी हाँ, बढ़िया ये क्रिकेट देखने को मिल रही है। और 8 ओवर के बाद स्कोर है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और शिवा अपने दूसरे ओवर को लेकर आते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जुड़ेंगे वापस आपके साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में शिवा की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, ये विजय स्ट्राइक पर वापस खेला गेंदबाज की तरफ, एक भी रन नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी है शिवा की। जी हाँ, पूरा सम्मान दे रहे हैं विजय भी उनकी गेंदों को। आसान नहीं है ऐसी गेंदों को मारना। सैंतालीस का स्कोर। बढ़िया गेंद एक और निखिल के पास गेंद जाने का मतलब है कि आप रन नहीं ले सकते। पॉइंट पर ऐसे तैनात है जैसे कोई चीता होता है जो अपने आसपास के 5-5 मीटर दूर तक गेंद को कहीं जाने नहीं देता है। जी हाँ, चीते की तरह शिकार करते हैं निखिल। और ये विजय ने भी कहा, बहुत किया सम्मान, जबरदस्त प्रहार। क्या शॉट है 6 रन के लिए।
जी हाँ, सीधा खेल दिया और अर्धशतक पूरा जस्ट क्रिकेट की टीम का इस शॉट के साथ। क्या जबरदस्त प्रहार, आगे की तरफ डाली हुई गेंद और विजय के क्या ही कहने। और इसी तरह की बल्लेबाजी की मैं बात कर रहा था। जी हाँ, जब ये मारना शुरू करते हैं तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिवा को, इसे क्रिकेट में कहते हैं गेटिंग अ ट्रीटमेंट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यही उन्होंने बल्लेबाजी में किया है गेंदबाजों के साथ। और अब विजय ने रिटर्निंग द फेवर किया उनको। शिवा की अगली गेंद, क्या वापसी कर पाएंगे? बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर पुल करने की कोशिश। जी हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। विजय ने गेंद को हाथ से उठाने से पहले यहां पर अंपायर से सलाह ली, उनकी एक तरह से परमिशन ली और अंपायर की अनुमति के बाद ही उन्होंने गेंद को छुआ हाथ से, वरना हैंडल द बॉल का रूल होता है क्रिकेट में। और ये युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ऐसे ही हाथ से गेंद नहीं उठा सकते आप, अंपायर की अनुमति लेनी ज़रूरी। अगर आपने ये देखा हो इस गेंद पर तो आपने ज़रूर इस बात को गौर किया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी है, ऑफ स्टंप के बाहर का चैनल रखते हुए, और खासी स्विंग भी मिल रही है इन्हें। और ये ओवर की समाप्ति, 9 ओवरों के बाद स्कोर है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और विजय और मानवेंद्र की ये एक साझेदारी पनपती हुई। 106 रन चाहिए अब 66 गेंदों पर, 11 ओवर में 106 रन चाहिए। हालांकि विजय और मानवेंद्र रहेंगे तो कोई बड़ा स्कोर नहीं है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में बहुत ही बढ़िया शॉट ये मानवेंद्र का, हालांकि एक ही रन होगा। प्रतीक यादव अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं, पुल किया इसे। और जी हाँ, आप लंबे बल्लेबाजों को अगर छोटी गेंदें कराएंगे तो वो पुल करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इन बल्लेबाजों को ऊपर खिलाना भी खतरे से खाली नहीं, तो गेंदबाज हमेशा असमंजस में ही रहता है कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। बढ़िया शॉट, खड़े खड़े हमारा 4 रन हो सकता है यहां पर, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण भी, और एक ही रन में तब्दील कर दिया। वाह, तारीफ करनी होगी। अच्छा शॉट था ये, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ विजय के द्वारा। और ये बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, बहुत ही लंबी गेंद डाली है। और ये धीमी गेंद डाली है उन्होंने, स्लोअर डिलीवरी जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया इस गेंद का, और इसका प्रयोग ज़रूरी है ऐसे बल्लेबाजों के खिलाफ। और ये बड़ा शॉट, बड़ा छक्का। जी हाँ, और जहां आपने ऊपर डाली गेंद वहीं मानवेंद्र और विजय प्रहार करेंगे, और ज़बरदस्त प्रहार 6 रन के लिए। और ये सीख नहीं रहे हैं अपने पिछले ओवर की गलती से। दूसरा ओवर है और 2 छक्के खा चुके हैं बड़े। हालांकि गेंदबाजी अच्छी कराई है, और एक और अच्छी गेंद, कमबैक अच्छा करते हैं, लेकिन मानवेंद्र ने यहां खराब शॉट खेला। क्रॉस खेलना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर का गेंद, पैर नहीं बढ़ा उनका।
61 रन स्कोर है, 10वां ओवर चल रहा है, 1 गेंद बची है, 3 विकेट जा चुके हैं और ये साझेदारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जस्ट क्रिकेट दल के लिए। और एक और जबरदस्त प्रहार, क्या यहां पर ये बड़ा शॉट है, जी हां 6 रन, खराब गेंदबाजी और 6 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन स्कोर है और मानवेंद्र की तारीफ करनी होगी, 3 बड़े छक्के लगा चुके हैं और ये अंपायर ने अपना निर्णय बदला है। 4 रन थे, छक्का नहीं था, चौका था और स्कोर हो गया है 65। 3 विकेट के बाद 10 ओवरों की समाप्ति पर और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आपके पास आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। ऋषि मापारा आए हैं अपना अगला ओवर डालने। 1 ओवर में उन्होंने 1 भी रन नहीं दिया था और लगभग 1 विकेट ले ही लिया था। हालांकि तीसरे अंपायर ने खारिज की उनकी एलबीडब्ल्यू की अपील उस ओवर में, लेकिन मेडिन ओवर डालना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो भी एक T20 मैच में। बहुत ही ज़बरदस्त ये हरफन मौला खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ का गेंदबाज और बाएं हाथ से ही बल्लेबाजी भी करते हैं। हालांकि आज बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में आते ही अपना कमाल दिखा दिया है। मेडिन ओवर पहला और दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं और विजय ने आराम से खेला इसे, स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन ले लिया। मोहम्मद स्ट्राइक पर और ये खराब शॉट और ये कैच छोड़ दिया। यहां पर बहुत बड़ी ये गलती साबित हो सकती है और 1 रन ले लिया है विजय ने यहां पर। जी हां, ये खराब शॉट था, शॉट थर्ड मैन की दिशा में कैच उछला और ये बड़ी भारी गलती हो सकती है वहां पर। आसान कैच नहीं था, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने कोशिश बहुत की, लेकिन और ये जबरदस्त प्रहार, 4 रन, 1 बाउंस और 4 रन, सिर्फ 1 टप्पा लेकर चौका। जी हां, विजय सिंह खतरनाक बल्लेबाज है। छोटी गेंद थी वो भी लेग साइड की तरफ। चौके में तब्दील किया विजय ने उसे। और ये डॉट गेंद, अच्छी वापसी ऋषि की। हालांकि ये कैच जो छूटा है मानवेंद्र का इस ओवर में, ये बहुत महंगा साबित हो सकता है एंटीक फ्रेंड्स को। पूरी तरह जाल में फंसा लिया था फ्लाइट के। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश मानवेंद्र की, लेकिन चूक गए। हालांकि अब इतिहास हो चुका है वो। वर्तमान में आते हैं, बहुत जबरदस्त प्रहार और ये एक और चौका और खराब गेंदबाजी। क्या गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय, छोटी गेंदें डाल रहे हैं ऋषि। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी विजय की और देखते ही देखते 75 रन स्कोर हो गया है इस ओवर में। अच्छे खासे रन बन गए हैं, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में।
और अभी एक गेंद बची है, विजय की तारीफ करनी होगी। जी हाँ, इन्हें आउट करना ही पड़ेगा एंटिक फ्रेंड्स को, वरना ये मैच पकड़ से निकल जाएगा बहुत जल्दी। विजय बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत तेज़ स्कोर करते हैं। 1 रन लिया आराम से मिड विकेट की दिशा में। ऋषि ने अच्छी वहाँ पर फील्डिंग की, लेकिन 1 रन नहीं बचा पाए और 76 रन स्कोर हो गया है 11 ओवर के नुकसान की समाप्ति पर और 3 विकेट के नुकसान पर। जस्ट क्रिकेट 11 ओवर 76 रन 3 विकेट। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, आई कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। शिवा कोन आ रहे हैं अगले ओवर को लेके और विजय स्ट्राइक पर। और बहुत ही बढ़िया ये वहाँ पर कोशिश विकेट कीपर की। और क्या ये 2 रन के लिए आना चाहेंगे? जी नहीं, 1 से संतुष्टि। और ये लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। और ये बढ़िया शॉट यहाँ पर, लेकिन क्या ये आउट होंगे? जी नहीं, गैप में खिला हुआ शॉट। 1 ही रन मिलेगा हालांकि। मानवेंद्र का बढ़िया शॉट, लेकिन रन 1 ही मिला। और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक ने अच्छी फील्डिंग करते हुए उसे 1 ही होने दिया। विजय वापस स्ट्राइक पर, शिवा विजय को। और ये जबरदस्त प्रहार और 4 रन डीप मिड विकेट पर खेला हुआ बहुत ही बढ़िया शॉट। छोटी गेंद थी और विजय जाने जाते हैं अपनी बल्लेबाजी के लिए। और क्या जबरदस्त बैटिंग विजय की। बहुत मुश्किल है इनको गेंदबाजी कराना किसी भी गेंदबाज के लिए। और बढ़िया बल्लेबाजी और बहुत ही बढ़िया साझेदारी हो रही है विजय और मानवेंद्र के लिए। और अगर ये दोनों खड़े रह गए तो इस मैच को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 29 गेंदों पर 44 की पार्टनरशिप हो चुकी है, साझेदारी। जबरदस्त प्रहार और 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय सिंह, तारीफ करनी पड़ेगी इनकी। बहुत ही जबरदस्त, लेकिन वहां पर कोशिश की पॉइंट के क्षेत्र रक्षक निखिल ने। और ये कैच हो सकता था, तेज प्रहार था और ये छूटा कैच। हालांकि आसान नहीं होते हैं ऐसे कैचेस लेना, लेकिन विजय जैसे बल्लेबाज को आउट करने के लिए आपको खासी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बढ़िया रिप्ले यहां पर देखने को मिला, जिससे हमें पता चला कि ये कैच हो सकता था। यहां विजय के बल्ले से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तगड़े शॉट्स निकल रहे हैं। और वाइड गेंद, एक शिवा थोड़ा प्रेशर में है शायद। जी हाँ, 2 चौके लग चुके हैं तो कुछ अलग करने की कोशिश शिवा की और वाइड गेंद डाल दी वहां पर। स्कोर 87 हो गया है। हर ओवर में 10-12 बनते जा रहे हैं। इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई हैं। क्या शिवा अपनी टीम के लिए एक और विकेट दिलवा पाएंगे? बढ़िया बल्लेबाजी कहूंगा मैं इसे, अच्छी गेंदबाजी भी है। शिवा ने बहुत बढ़िया वापसी की, लेकिन विजय को भी पता है कि उनका विकेट कितना अनमोल है, कितना बहुमूल्य है।
इसीलिए ज़रा सी भी चांस नहीं ले रहे हैं, अपने विकेट के साथ गलत शॉट्स नहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके गैप में खेलने की कोशिश कर रहे हैं विजय। शिवा की अगली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद है, लेकिन एक रन फिर से ले लिया मानवेंद्र ने तेज़ी से, और विजय के पास वापस स्ट्राइक रहेगी। और ये बहुत बढ़िया मैं कहूँगा रणनीति है मानवेंद्र और विजय की कि आखिरी गेंद पर रन ले लेते हैं और स्ट्राइक विजय के पास आ जाती है। हालांकि मानवेंद्र भी ज़बरदस्त खेल रहे हैं, 21 रन पर नाबाद 16 गेंदों का सामना करके, और विजय 28 पर नाबाद हैं 20 गेंदों का सामना करके। और अब ड्रिंक्स के लिए अंपायरों ने इशारा किया है, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। ऋषिमा पारा आए हैं अपना अगला ओवर लेके, और विजय स्ट्राइक पर। 12 ओवर में स्कोर है 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 8 ओवर में अब चाहिए 71 रन।
इस मैच को जीतने के लिए, और 9 रन प्रति ओवर से भी कम का रिक्वायर्ड रन रेट 8.88। और अब हम अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेज़ी कमेंटेटर से कि वो आएँ और अंग्रेज़ी कमेंट्री के ज़रिए आप सभी का मनोरंजन करें। Oh, that's a wonderful start by Rishi, and thank you, Charlene, for your wonderful Hindi commentary once again. Rishi starting off really well in his next over. He's bowled 2 overs and this is his third, and Vijay has been in tremendous form. Rishi bowling good line to Vijay. Another dot delivery. Vijay seems to be in no hurry. That's the hallmark of a very solid and a good batsman. He knows his strengths, can hit the long shots whenever he wants to. And this time he hits a big one. And that's a 6, and that is what I was talking about. Vijay Singh is a special player. Doesn't bother if a couple of dot balls are played by him. He knows a third can always go for a huge 6, and that's what happened here. A flat 6 on the long on boundary there by Vijay. Absolutely brilliant batting that is. He's on 34 now. And this time again playing a defensive stroke. Just pushing it towards the point fielder Nikhil there, doing well. A dot ball again. So a 6 scored of the first 4 deliveries, last 2 left in this over. What a wonderful hit that is. Absolutely brilliant. This is probably one of the biggest sixes of the TSL, and Vijay is in top form. That's a huge 6 and he hits it towards the long on boundary. Once again the fielders just spectators there, and Vijay is in top form. Shimapara being dealt with really severely by Vijay. 2 huge 6s, and the last one was out of the park with such ease. That's the end of another over by Rishi, a very expensive one for the Antique Friends. Vijay is on fire, and we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
We apologize to our viewers due to some technical glitch. We could not bring you the commentary for the last 1 over. And what a shot by Vijay, absolute carnage by him. A boundary and a 6, and he completes 50. A hallmark of a champion batsman. And Nishant under pressure. Bowls are wide there. Or is it a leg by? We'll just have a look. An umpire signalling it as a leg by, so that did hit the pad, and Vijay confirming it with his gesture there. What a wonderful 6 that was. Probably one of the biggest 6s we have seen in the TSL by Vijay. Absolutely brilliant, this batsman. Once he starts going, which we had already mentioned, he is absolutely unstoppable. And again, a poor delivery down the leg side. This could go all the way to the boundary, but the ball stopping. And Vijay coming back for the second. So 3 runs this time. This will be a wide for sure. It is a wide signal by the umpire. Nishant under a lot of pressure in this over. And Vijay has made it so easy for Just Cricket to chase a score of 159. The score right now is 125 already. Another good shot played. Nishant this time checking his line and bowling a good delivery, a single towards the sweeper. That's the end of the 15th over, and the score is 126 for the loss of 3 wickets. And this is a wonderful partnership between Vijay and Manvendra. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. What a wonderful way of finishing his 50 there, Vijay. Absolutely brilliant he is. We'll be back after a short commercial break. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है क्या हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Nikhil being introduced into the attack. Good shot by Vijay, just a single this time though. To the long on fielder. 127 is the score, just 32 needed now in 4.5 overs, and he's made this chase look really easy. Vijay Singh is known for his blitzkrieg batting. This time it was no different. A 50 scored so easily, and Manvendra giving him brilliant support as well. Credit goes to him as well for this partnership with Vijay. And the partnership is now worth 89 of just 52 deliveries. What a wonderful way. And this time he's missed it, but no chance of an LBW, and Nikhil knows that, hence did not appeal much. But that was a good delivery, drawing him forward and then spinning the ball. Absolutely brilliant that was. That's a short delivery, and this time he's very unlucky. Could have bowled him as well, but it misses everything, and the keeper also did not have much to do there. A boundary scored of byes. So 4 welcome runs. No matter how they come, runs are absolutely valuable, especially when you are chasing. But when you have Vijay Singh at the crease, no score is unachievable. That we have seen on a number of occasions. Today has been no different. And what a shot in the last over towards the cover as well. And this time Manvendra finally succumbing to some really good bowling by Nikhil. Credit goes to him.
Absolutely brilliant bowling. And some good sportsmanship spirit shown by both the teams there. Manvendra being congratulated by Nikhil. Just have a look at the replay there, and he clean bowls him. That's a good innings by Manvendra coming to an end. He scored 28 runs of just 25 deliveries, and the fourth wicket for Just Cricket is down on a score of 131. This is the 16th over, and we'll be right back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. The new batsman coming in. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Aditya Singh is the new batsman, and he'll accompany Vijay. Just 28 needed to win this match of 25 deliveries. This is the 16th over, and we'll request our Hindi commentator to join in from the next over and take you till the end of this innings with his Hindi commentary. Aditya facing his first delivery. Nikhil bowling really well. Should have been introduced in the attack earlier, it seems, the way he's bowling. Took a wonderful wicket of Manvendra, who played a very important hand in this partnership. 28 he scored though of just 25 deliveries, but the steadiness and the stability that was required, and Aditya trying to hit a big shot right from the word go, not succeeding. Well bowled by Nikhil. Another good over ending. The score is 131 for the loss of 4 wickets after 16 overs and just 28 needed in 4 overs. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें.
Rishi Mapara to bowl his last over. Vijay on strike. Another short delivery and Vijay pulls it for a boundary again towards the fine leg region. And we'll now request our Hindi commentator to take over and take you through till the end of this match. We welcome you again, Shali. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज़बरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली है विजय सिंह के द्वारा। 59 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं और क्या ज़बरदस्त प्रहार किए उन्होंने, चाहे चौके हो चाहे छक्के हो, एक से एक करारे प्रहार। और एक और बड़ा शॉट, क्या ये छक्का होगा? जी हाँ, बड़ा छक्का। ये आसानी से पार पहुंचा देते हैं सीमा रेखा के, इनकी खासियत है। और उन्हें पता है किस गेंदबाज पर प्रहार करने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये बल्लेबाज, शायद टीएसएल के सबसे बढ़िया बल्लेबाजों में से एक। और इतना ताकतवर बॉटम हैंड है इनका कि उन्हें पता है कि एक दो गेंदे डॉट भी निकल जाएं अगर, तो कभी भी अगली गेंद पर छक्का मारकर उसकी भरपाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ये प्रतिभाशाली बल्लेबाज और बहुत ही स्पेशल क्रिकेटर जिसे कहेंगे, उस तरह के ये खिलाड़ी हैं विजय सिंह। यहाँ देखते ही देखते 141 हो गया है स्कोर, सिर्फ 18 रन अब चाहिए। गेंदबाजों के पास जवाब नहीं है विजय को रोकने का। हर ओवर में चौके छक्के ऐसे लगाए हैं, उस मैच को एक तरफा बना दिया है। 65 पर खेल रहे हैं नाबाद और 18 रन ही सिर्फ चाहिए अब। 22 गेंदें बची हैं। जी और संयम नहीं खोते हैं। ये देखिए, अच्छी गेंद का भी उन्होंने अच्छी तरीके से ये सम्मानपूर्वक शॉट खेला और 1 रन लिया कवर पॉइंट की तरफ। बहुत ही जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हैं और साथ ही साथ ऐसे खतरनाक शॉट्स लगाते हैं कि किसी भी टीम का मनोबल गिर सकता है। और इनकी टीम का नाम जस्ट क्रिकेट है, बिल्कुल ही सही नाम है और इस खिलाड़ी पर तो पूरी तरह फिट बैठता है। और इस बार आदित्य ने हाथ खोले और ये आउट हो गए हैं हाथ खोलने के प्रयास में। बढ़िया कैच, लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के ज़रा सा पहले, और ज़रूरत नहीं थी इस शॉट की। आपको मैच ख़त्म करने पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। और ऋषि को यहाँ पर एक सफलता मिली है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, उनका चौथा ओवर है और विजय ने खेल को एक तरफा बना दिया है। लेकिन अभी भी क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको रिप्ले दिखाएंगे। ये देखिए, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश आदित्य की, हालांकि बहुत ज़्यादा ये अच्छा शॉट नहीं था, सीधे हाथ में गेंद दे दी। 5वां विकेट गिर गया 142 के स्कोर पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और दर्शकों से हम क्षमा भी चाहेंगे, बीच में थोड़ी देर के लिए तकनीकी खराबी की वजह से कमेंट्री थोड़ी देर तक आप तक नहीं पहुंचा पाए हम। हालांकि जिस तरह से मानवेंद्र और विजय ने आज साझेदारी की है, बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी। और राजेश नायडू आए हैं नए बल्लेबाज, ऋषि को सामना करेंगे उनका। बहुत बढ़िया ये शुरुआत ऋषि की, राजेश को वाह। और ऋषि मापारा की खास बात है, अंत तक मैच छोड़ते नहीं हैं और
जिस भी तरीके से हो सकता है योगदान देने में हमेशा आगे रहते हैं ऋषि। बहुत ही बढ़िया ये हरफन मौला खिलाड़ी, बाएं हत्था गेंदबाज और बल्लेबाज ऋषि मापारा, और एक विकेट भी ले ही लिया उन्होंने अपने चौथे ओवर में ही सही, लेकिन एक बल्लेबाज को पेवेलियन भेजा राजेश। ऋषि को एक बार फिर से खेलते हुए और ये डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति। 17 ओवर के बाद स्कोर 142 रन, 3 ओवरों में अब चाहिए 17 रन, और ये मैच अब महज एक औपचारिकता लग रहा है। हालांकि अभी भी विजय का विकेट अगर ले लेते हैं यहाँ पर एंटीक फ्रेंड्स तो शायद कुछ उम्मीद लगाना चाहेंगे। हालांकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये, विजय ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, आसान नहीं है ऐसे खिलाड़ी को रोकना। और निखिल आए हैं अपना अगला ओवर लेके। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी। अच्छी गेंदबाजी निखिल की यहाँ पर, विजय को बांधने की कोशिश उनकी। 17 गेंदों पर अब 17 रन चाहिए। विजय की खास बात यह है कि वो गेंदबाज को पूरा सम्मान देते हैं। अगर वो गेंद ऐसी नहीं है जिस पे वो मार सकते हैं, उन्हें लगता है, तो नहीं मारते हैं। हालांकि जब उन्हें अपनी, और ये जबरदस्त प्रहार, यही उनकी खास बात है, खराब गेंद को छोड़ते भी नहीं है। 6 रन के लिए पहुंचा दिया उसे सीमा रेखा के पार, और कितनी आसानी से छक्के मारते हैं ये। जी हाँ, युवाओं को इनसे सीखना चाहिए किस तरह से छक्के मारते हैं। हालांकि ज़बरदस्त बॉटम हैंड के भी धनी है ये, लेकिन इतनी आसानी से छक्के मारना भी कोई आसान काम नहीं है क्रिकेट के खेल में। सिर्फ 11 रन चाहिए अब। 2 बड़े शॉट इस मैच को ख़त्म कर देंगे। और इस बार निखिल खासे दुर्भाग्यशाली रहे, लेकिन 2 रन यहां पर आराम से ले लिए विजय ने, और विकेट कीपर से भी चूक हुई। और ये 22 के 2 रन, और ये 150 रन पूरे, 150 का आंकड़ा छू लिया जस्ट क्रिकेट ने। सिर्फ 9 रन की जरूरत अब, और यहां श्रेय देना होगा जस्ट क्रिकेट के गेंदबाजों को भी और अच्छी कप्तानी को भी। एक समय ऐसा लग रहा था कि एंटीक फ्रेंड्स आराम से 250 से 200 के बीच का स्कोर बना लेंगे, लेकिन 158 पर समेट दिया और रोक दिया एंटीक फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को जस्ट क्रिकेट के गेंदबाजों ने। और ये जबरदस्त प्रहार 6 रन के लिए। जी हां, कोई शक ही नहीं है इस शॉट में, बड़ा छक्का ये। और निखिल के पास भी कोई जवाब नहीं है। जिस तरह के बल्लेबाज हैं विजय सिंह, और 78 पर आ गए हैं, और ये क्या बल्लेबाजी करते हैं, मानना पड़ेगा। इनकी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम है। जी हाँ, एक से एक बड़े हमने यहां पर धुरंधर खिलाड़ी देखे, लेकिन विजय सिंह का कोई सानी नहीं है। किसी भी गेंदबाज को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में सक्षम ये बल्लेबाज। सिर्फ 3 रन चाहिए और 2 गेंदें बची हैं इस ओवर में, और इसके बाद 2 ओवर भी बचे हैं। तो कोशिश तो ये करेंगे कि शायद इसी ओवर में खत्म करें। डीप मिड विकेट पर खेला हुआ ये करारा प्रहार 6 रन के लिए। इसी ओवर में स्क्वायर लेग पर भी एक डीप स्क्वायर लेग पर छक्का मारा है। जी हाँ, ऑन साइड पर तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये करारा प्रहार 4 रन हो जाएंगे, और ये मैच समाप्त होते होते बच गया। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर।
जी हाँ, तारीफ करनी होगी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक की। ऐसा लगा कि चौका जाएगा और मैच समाप्त, लेकिन अब 2 ही रन चाहिए। 1 ही रन मिला उस गेंद पर विजय को। 79 की स्ट्राइक के स्कोर पर आ गए हैं। राजेश नायडू ने बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर। जी हाँ, और ये शायद चौका हो जाएगा। जी नहीं, लेकिन 2 रन भाग कर ले लेंगे और ये मैच की समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही आसानी से ये मैच जीत लिया जस्ट क्रिकेट ने और विजय सिंह की तारीफ करनी होगी। 79 रनों की नाबाद पारी खेली और क्या बल्लेबाजी की है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राजेश नायडू भी 2 रन पर नाबाद रहे 3 गेंदें खेलकर, लेकिन 42 गेंदों पर 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी। 18 ओवर में ही 159 रन का लक्ष्य आराम से उसका पीछा किया है जस्ट क्रिकेट ने और ये मैच जीत लिया है 5 विकेट से जस्ट क्रिकेट ने। पेटीएम फर्स्ट गेम द सुपर लीग 2021-22 के एडिशन का ये बहुत ही बढ़िया मैच जीता है जस्ट क्रिकेट ने एंटीक फ्रेंड्स को हरा के। और हम धन्यवाद करेंगे सारे दर्शकों का कि आपने हमारी इस लाइव कमेंट्री को सुना और आपका जो हमारे टूर्नामेंट के लिए समर्थन रहता है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विदा लेंगे